I, hello friends. I, Dr. Sourav Gautam, Assistant Professor, Department of Chemistry, School of Basic and Applied Sciences, Maharaja Aghassani University, Solar. And today my topic is group theory. And under this topic, we are going to discuss group multiplication table for water molecule. So what is group? It is the collection of elements and elements. In last lecture हमने discuss किया था symmetry elements and symmetry operations. What are symmetry elements? These are geometrical entities which are related to the effect of symmetry operation. These are a line, a plane, a group, or a figure with respect to which one or more symmetry operations can be carried out. And symmetry elements are static entities while the operations are dynamic, right? And symmetry operation is a movement of the body. Body means it is a object, figure, a function, maybe a line, point, such that after the movement has been carried out, every point in the body is coincide with an equivalent points for the same point of the body in its original form, right? So today main topic is group multiplication table. So in group theory, fundamentals of group theory are developed by Everest Boyce. It is the study of symmetry. It is purely mathematical concept with which wide application in physical sciences. When applied to chemistry, it can be used, for examples, to predict whether or not a molecule have a dipole moment, to predict if a molecule will show optical activity, to drive selection rule, to determine which atomic orbitals to be used to construct hybrid orbitals, to predict which molecule vibrations lead to IR spectra, and to level and designate molecular orbitals, right? So for water molecule, this is water molecule structure. In this structure of water molecule belongs to the point group C2P. As already discussed in last lecture, the point group of water is C2P. So the symmetry elements possible for water molecules are E identical C2 means twofold symmetry, sigma V, that is planosymmetry, vertical planosymmetry, and sigma here sigma V and sigma V dash. Sigma V for one plane and sigma V dash for another plane. See, this is water molecule structure, right? In this water molecule, this is water molecule. This plane is XZ plane. XZ plane. As we know, this is x-axis, this is y-axis, z-axis, this is y-axis. So this plane is z-axis and in x-axis plane, right? This is for z-axis and y-axis. Clear? And second one is this plane is for y and z axis. This is in the direction of y and z axis. This one, this plane, right? And this arrow is for z axis. Clear? So in group multiplication table, it can have operations in place of operators, and then a confirmflex is placed on the top of the corresponding operations. The use of multiplication is quite simple. The operation in the upper row is followed by the operation in the left column. See, in this table, 4 elements
symmetry elements identical C2, sigma V and sigma V dash in upper row and in column. First point, first cell, in which in first cell we have to write point group, that is C2V for water molecule, C2V for water molecule, right? Then same four elements identical C2, sigma V dash, and same ही left column में E identical C2, sigma V and sigma V dash, right? So the operation in the upper row is followed by the operation in the left column. It means upper row जो element है उसको commute करना है किससे? Operation in left row. The product of two operations is given where particular operation in the row and column meets each other. For example, identical and identical जहां मिल रहे हैं यहां पे इसका रिजल्ट लिखा जाएगा, राइट? P2 एंड आइडेंटिकल कहां मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं सेकंड सेल में, तो यहां पे इसका रिजल्ट लिखा जाएगा. For example, one wants to know the resultant of sigma V dash operation followed by sigma V operation on water molecule. Then we search for a point below sigma V dash in the column where a line from the position of sigma V in the column meet and find C2 there. It means that the product of sigma V YZ plane means sigma V dash and sigma V XZ means sigma V, simple sigma V. In the column where a line from the position of sigma V in the column meets and finds C2 there, note that the sequence of operation is always from left to right. It means that the product of sigma B or sigma B dash is C2. And sigma V dash and sigma V result कहाँ आएगा? इस point पे. Second last point table, right? So in each group identity rule, in each group there should be an identity element which commute with an other and leave them unchanged. Identical जो element है वो किसी भी element से अगर commute करता है तो उसका product क्या आएगा? Identical. When it commute any element and it leaves them unchanged, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, identical रहेगा result, right? For example, identical commute with any element A, then result would be A. Identical commute with element B, result would be B. Clear? So what is identical rule? In each group, there should be an identity element which commute with an other and leave them unchanged is called identity rule, right? So this is structure of water molecule. Red part is, for example, red part is oxygen and two white pairs are, first one is HA, second one is HB. Clear? So हम कैसे दे सकते हैं किसी वाटर मॉलिक्यूल को एज ए प्लेन? फर्स्ट, फॉर एग्जांपल this is, let's suppose this is oxygen, this is one hydrogen, this is second hydrogen. After two rotation क्या हो जाएगा? After two rotation of 180 degree, one rotation and again इसको जब हम रोटेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. So after two rotation we can get identical configuration, same configuration पे दो रोटेशन देने के बाद कितने डिग्री की? 180 डिग्री की A, then again second दोगे तो आपके पास identical shape आ जाएगी. After two rotation we can get equivalent configuration. So the second one is, so it have element symmetry element C2, two-fold symmetry जिसे बोलते हैं. And first
प्लेन इज एक्स जेड प्लेन, जेड एक्सिस की तरफ है और एक्स एक्सिस की तरफ है, एंड सेकंड प्लेन इज जेड एक्सिस की तरफ है ये प्लेन और बाहर को। एक तो ये है फर्स्ट प्लेन जेड एक्सिस की तरफ एंड जेड एक्सिस और इस तरफ हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, राइट हैंड रूल, दिस इज राइट हैंड रूल, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। तो फर्स्ट प्लेन इज जेड एक्सिस की तरफ है और एक्स एक्सिस की तरफ है, देखो ये वाला सेकंड फिगर, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा बी एक्स जेड प्लेन, एंड सेकंड थर्ड फिगर में देखो, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बी वाई जेड प्लेन, राइट। So this is the different rotation of water molecule C2P, जेड एक्सिस से ऐसे रोटेशन करेंगे 180 डिग्री की, जैसे एरो दिया है, ठीक है। एंड सेकंड सिग्मा एक्स जेड एंड दिस इज सिग्मा वाई जेड, क्लियर है। सो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एंड different plane, dotted line plane is sigma v yz and the solid line plane is sigma v xz, right? And this is the C2 rotation from z axis. What is z axis? It is principal axis. What is principal axis? The plane maximum number of rotation is carried out around any plane is called any axis, sorry, is called principal axis. ऐसी एक्सिस जिसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रोटेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और अदर जो एक्सिस है रिमेनिंग आर सब्सिडियरी एक्सिस, राइट। सो इन दिस टेबल क्या करना है आपने, फर्स्ट रो है ये अपर रो, आइडेंटिकल को फर्स्ट इससे कम्यूट करना है आइडेंटिकल से, देन फर्स्ट रो को सेकंड पॉइंट से C2 से रोटेट करना है, देन आइडेंटिकल को सिग्मा बी से, देन आइडेंटिकल को सिग्मा बी डैश से ऑपरेट करना है, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल और आइडेंटिकल, अपर रो एलिमेंट फॉलोड बाय लेफ्ट रो, लेफ्ट कॉलम, इसमें जो भी रिजल्ट, ये ऑपरेशन लगाया वाटर पे आइडेंटिकल, देन आइडेंटिकल ऑपरेशन लगाया, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो जहां पे मिलेगी ये दोनों रो वहां पे लिखा जाएगा, राइट। सो दिस इज टेबल फॉर अपर रो एलिमेंट्स commute with left column elements and results are C in first row HA and HB आइडेंटिकल ऑपरेशन जब लगेगा वाटर मॉलिक्यूल पे तो क्या रहेगा, आइडेंटिकल ही रहेगा। तो ये देखो स्ट्रक्चर सेम रहेगी, HA इस तरफ है, HB इस तरफ है, अगेन इस पे आइडेंटिकल लगेगा तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, आइडेंटिकल। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका बेटा, आइडेंटिकल। सी इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेल point group C2B and first row is 4 elements and first row, upper row and left column are 4 elements। दोनों जिस तरफ वाटर पे मान लो फर्स्ट रो अपर रो का एलिमेंट ऑपरेशन लगा, देन लेफ्ट जो कॉलम है उसका ऑपरेशन लगाओगे तो जो रिजल्ट आएगा, दोनों रो और कॉलम जहां पे मीट करेंगे, मिलेंगे, वहां पे इसका रिजल्ट लिखना है, राइट। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेशन इज गिवन वेयर पर्टिकुलर ऑपरेशन इन रो एंड कॉलम मीट ईच अदर, वहां पे इसका रिजल्ट लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल पे हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, C2, देन C2 लगाया, मीन रोटेशन देनी कितने डिग्री की, 180 डिग्री की, ऐसे आ गया, हाइड्रोजन 1 इधर चला गया, हाइड्रोजन 2 इधर 1 की तरफ आ गया, ठीक है। अगेन इस पे C2 लगाया, लेफ्ट कॉलम वाला, तो अगेन 180 डिग्री रोटेशन, ये वापस अपनी जगह आ गया, ये अपनी जगह आ गया 180 डिग्री, राइट। तो रिजल्ट क्या आ गया, सेम आइडेंटिकल। अब देखो दोनों पॉइंट कहां मिल रहे हैं, C2 और C2 दोनों मिल रहे हैं, वहां पे क्या रिजल्ट लिख दिया हमने, आइडेंटिकल, क्लियर है। सो ऐसे ही आप रो के जितने एलिमेंट्स है फॉलोड बाय लेफ्ट कॉलम एलिमेंट्स,
उनको फॉलो करते हुए जो रिजल्ट आपका जाएगा टेबल पे लिखते जाइए। क्लियर है? सो सी बॉटम मॉलिक्यूल पे जब हम C2 लगाएंगे, देन आइडेंटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास C2। एंड बॉटम मॉलिक्यूल पे नेक्स्ट अपर रो फॉलोड बाय लेफ्ट कॉलम C2 एंड C2 रिजल्ट क्या आएगा आइडेंटिकल, देन C2 सिग्मा बी एक्स जेड रिजल्ट क्या आएगा सिग्मा बी वाई जेड, एंड C2 सिग्मा बी वाई जेड रिजल्ट क्या आ जाएगा सिग्मा बी एक्स जेड, राइट? देन सिग्मा बी एक्स जेड and identical result is sigma b xz. Similarly, sigma b yz, y dash sigma b dash identical sigma b dash c2 sigma b dash sigma b and sigma b dash we can get sigma b yz, sigma b xz, c2 and identical. So this is our group multiplication table for water molecule. तो जो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल का रूल है कि कोई भी आपका एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल, ठीक है? प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑलवेज इज द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो जो रिजल्ट है वो उसी ग्रुप में से एक एलिमेंट होगा। दिस इज क्लियरली सीन फ्रॉम दिस आइडेंटिकल आइडेंटिकल, इनका प्रोडक्ट क्या है आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल है, चार सिमेट्री एलिमेंट्स है वाटर मॉलिक्यूल में, कोई भी देख लो सिग्मा बी वाई जेड, किसी का भी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द ग्रुप, उनका जो प्रोडक्ट होगा it is always be a element of same group, right? So this is all about group multiplication table for water molecules. Thank you so much.